As has become our annual custom, yet another person accused of blasphemy was recently lynched, accosted by a deranged mob in Nankana Sahib, which dragged him out of a police station, pummeled the life out of him, and then attempted to set his body on fire before law enforcers found the guts to intervene. Last year, a teacher in Di Khan was fatally stabbed by her students, a handicapped man was forcibly drowned in Gotki, and a person, reportedly with a mental illness, was snatched from police custody, hung by his neck to a tree, and stoned to death in Canewell. All on similar suspicions. This is a sign, our brutalization as a society is nearing completion. It is a pity that the only time we think it necessary, or perhaps possible, to turn our attention to the prickly issue of blasphemy is whenever some hapless soul or another has found themselves killed in the most monstrous of manners, axed, shot, set ablaze, or cooked inside a brick kiln. By now, our response to these macabre instances has been finessed, standardized almost. The act itself is censured to varying degrees, a round of generalized condemnation follows, similar occurrences in the past are revisited, the word reform is whispered, lest it ignite more trouble, and then we continue to bear witness to such tragedies, even as they recur with an astonishing increase in frequency. A study conducted by CRSS sheds shocking light on the phenomenon. From 1947 to 1990, only 3 people were killed in blasphemy-related vigilantism. By 2021, this figure had jumped to 89. That is an increase of 2,866%. Just as disquieting is the rise in the number of criminal complaints being processed. Till 1990, only 20 cases were registered, but by 2021, this number had leapfrogged to 701. That represents an increase of 3,405 PC. In tandem has been an escalation in accusations, from a measly 17 till 1990, to a whopping 1,306 by 2021, an increase of 7,528 PC. This is staggering data, and should be a cause for deep unease for anyone who cares for the sanity of this polity. What could cause such a sudden explosion of fiery allegations and fanatical murders? There are reasons aplenty, the most obvious being this: the 1990s were preceded immediately by the Zia regime and its politically colored Islamization project, which ushered in a sea change throughout our legal landscape, and hence, our social fabric. The most drastic alterations occurred in criminal law, that deeply sensitive realm where people are disciplined and punished, and there, an attempt was made to implant an ultra-orthodox understanding of the Islamic concept of hudud, a long-time demand of religious parties, some of whom played a key part in sculpting its ultimate facade. This is a sign, our brutalization as a society is nearing completion. Blasphemy laws as we know them today are a collection of crimes found in a specific chapter of our penal code devoted to offenses against religion. Before the program went into full swing, it used to have a handful of provisions that criminalized things like injuring or defiling a place of worship, disturbing a religious assembly, trespassing on burial grounds, and insulting the religion or religious beliefs of any class. This last one is Section 295A, enacted in 1927 after the colonial administration failed to convict Hindu publisher Rajpal, killed shortly after by a young man named Ilmuddin in 1929, who has since achieved sainthood status. Sentences under these provisions were comparatively lax, ranging from a maximum of 1 to 2 years of imprisonment, or a fine, or a combo of the two. None of these offenses were religion-specific. They sought to control communal tensions by safeguarding religious sentiments, and the protection they offered extended, at least in principle, to every religion. Zia and his henchmen changed all this. Section 295A was strengthened with 10 years imprisonment. Additional crimes were introduced. This time, they were all specific to Islam. Desecrating the Quran became punishable by life imprisonment. Insulting the Prophet, PBUH, by life or death, the possibility of a life sentence was ruled out by the Federal Shariat Court in 1990 as repugnant to Islam. Also added was a provision, subject to 3 years max, that criminalized disparaging the Sahaba. The National Assembly lately passed a bill proposing to extend this to 10 years, along with 2 other offenses, of equal severity,
that were tailored to ensure that Ahmadi citizens would not be able to pose as Muslims, or propagate their version of faith, or in any manner whatsoever outrage the religious feelings of Muslims. The Supreme Court affirmed the constitutionality of these provisions in 1993, mostly on the rationale that since Islam and its epithets were the intellectual property of Muslims, any public display by an Ahmadi of the same could cause offense to the community, spark an issue of public order, and could therefore reasonably be curtailed. And so, Pakistan took its place amongst a handful of countries with the harshest and most discriminatory blasphemy laws in the world. If this was intended to deter blasphemers, it has done the reverse. The issue has detonated into mind-numbing violence, especially in the last decade. Pinning all the blame on Zia, however, is a bit disingenuous. Islamization of some form or the other is the logical conclusion of a theologically constrained constitution that demands the application of the injunctions of Islam. Moreover, 30 years have passed since, and by now, these laws have acquired an implicit democratic character, assuming one did not pre-exist. So staunch is their support, in fact, that a sizable demographic deems them untouchable, effectively conflating calls for their reformation with heresy. This attitude, in an age where information is being cross-pollinated across cyberspace at hyperspeed, foreshadows disaster. Laws enacted through legislative assemblies are human products and must be kept under supervision, to be studied for their effects, examined for their continued suitability, and, should need ever arise, to be altered or removed, especially when their retention proves deleterious to public interest. To suggest otherwise is to compel ourselves to stagnation, and with polarization and radicalization ascending with such velocity, we risk sinking further and further into this abyss, weighed down by the incongruities of our own conscience. The writer is a barrister. Published in Dawn, March 29, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. जैसा कि हमारा सालाना रिवाज बन चुका है, हाल ही में ननकाना साहिब में तौहीन रसालत के इल्जाम में एक और शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसने इसे पुलिस स्टेशन से घसीटकर बाहर निकाला, इसकी जिंदगी छीन ली और फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुदाखलत करने की हिम्मत मिलने से पहले ही इसकी लाश को आग लगाने की कोशिश की। गुज़िश्ता साल DI खान में एक टीचर को इसके तालिब इल्मों ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया था। खूटकी में एक माजूर शख्स को जबरदस्ती डूबा दिया गया था और मुबैना तौर पर ज़हनी बीमारी में मुब्तला एक शख्स को पुलिस की तहवील से छीनकर उसकी गर्दन दरख्त से लटका दी गई थी और खानेवाल में पत्थर मारकर हलाक कर दिया गया था। सब एक जैसे शुकूक और शुबहात में मुब्तला हैं। ये एक अलामत है, एक मुआशरे के तौर पर हमारा जुल्म और सितम तकमील के करीब है। अफसोस की बात यह है कि जब हम अपनी तवज्जो तौहीन रसालत के घिनौने मसले की तरफ मबजूल कराना ज़रूरी समझते हैं, शायद मुमकिन है वो वक्त होता है जब किसी बेबस या किसी और ने खुद को बदतरीन आदाब में कत्ल कर लिया हो, जिसे काट दिया गया हो, गोली मारी गई हो, आग लगा दी गई हो, आइंद ओहे के भट्टे के अंदर पकाया गया हो। अब तक इन घिनौने वाक़यात के बारे में हमारा रद्द अमल तकरीबन मियारी हो चुका है। इस अमल को मुख्तलिफ हद तक तनखीद का निशाना बनाया जाता है। अमूमी मजम्मत का एक दौर शुरू होता है। माजी में इसी तरह के वाक़यात का असर नौ जायज़ा लिया जाता है। इस्लाह का लफ्ज़ सरगोशी की जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे मज़ीद परेशानियां पैदा हों, और फिर हम इस तरह के सानिहात की गवाही देते रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी तादाद में हैरत अंगेज इजाफा होता है। CRSS के जरिया की गई एक तहकीक इस रुझान पर हैरान कुन रोशनी डालती है। 1947 से 1990 तक तौहीन रसालत से मुताल्लिक हंगामों में सिर्फ 3 अफराद मारे गए। 2021 तक ये तादाद बढ़कर 89 हो गई थी। ये 2866% का इजाफा है। जिस तरह परेशान कुन बात यह है कि मुजरिमाना शिकायत की तादाद में इजाफा हो रहा है। 1990 तक सिर्फ 20 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन 2021 तक ये तादाद बढ़कर 701 हो गई थी। ये 3405% इजाफे की नुमाइंदगी करता है। इसके साथ साथ इल्जामात में भी इजाफा हुआ है,
जो 1990 तक 17 से बढ़कर 2021 तक 1306 हो गया है, यानी 7,528% इजाफा। ये हैरानकुन अदाद-ओ-शुमार हैं और इस सियासत की पाकीज़गी की परवाह करने वाले हर शख्स के लिए गहरी बेचैनी का सबब होना चाहिए। अचानक इश्तियाल अंगेज इल्जामात और जुनूनी कत्ल की वजह क्या हो सकती है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें सबसे ज्यादा वाज़ेह यह है 1990 की दहाई से फौरन पहले जिया हुकूमत और उसके सियासी तौर पर रंगीन इस्लामाइजेशन मंसूबे ने हमारे कानूनी मंजरनामे और इस तरह हमारे समाजी ताने बाने में एक बड़ी तब्दीली का आगाज किया। फौजदारी कानून में सबसे ज्यादा सख्त तब्दीलियां रूनुमा हुई, वो इंतहाई हसास दायरा जहां लोगों को नज़्म और ज़ब्त और सजा दी जाती है, और वहां हुदूद के इस्लामी तसव्वुर के बारे में एक इंतहाई रिवायती तफहीम पैदा करने की कोशिश की गई, जो मजहबी जमातों का देरीना मुतालबा था, जिनमें से कुछ ने इसके हतमी चेहरे को मुजस्सम करने में कलीदी किरदार अदा किया था। ये एक अलामत है, एक मुआशरे के तौर पर हमारा जुल्म और सितम तकमील के करीब है। तौहीन रिसालत के कवानीन, जैसा कि आज हम जानते हैं, हमारे पैनल कोड के एक मखसूस बाब में पाए जाने वाले जराइम का मजमुआ हैं जो मजहब के खिलाफ जराइम से मुताल्लिक हैं। इस प्रोग्राम के पूरे जोर और शोर से शुरू होने से पहले इसमें मुट्ठी भर दफात हुआ करती थी, जिनमें इबादतगाह को नुकसान पहुंचाना, इसकी बेहुरमती करना, मजहबी इज्तिमा में खलल डालना, तदफीन के मकाम पर तजावुज करना और किसी भी तबके के मजहब या मजहबी अकायद की तौहीन करना शामिल था। यह आखिरी दफा 295 है जो 1927 में नाफिज की गई थी, जब नौआबादियाती इंतजामिया हिंदू पब्लिशर राजपाल को मुजरिम करार देने में नाकाम रही थी, जिसे 1929 में इल्म अल दीन नामी नौजवान ने कत्ल कर दिया था, जिसने इसके बाद संत का दर्जा हासिल कर लिया है। इन दफात के तहत सजाएं निस्बतन नरम थी, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल कैद आ जुर्माना आ दोनों का इम्तिजाज शामिल था। इनमें से कोई भी जुर्म मजहब से मुताल्लिक नहीं था। उन्होंने मजहबी जज्बात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए फ़िरका वाराना तनाव पर काबू पाने की कोशिश की, और जो तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने पेश किया वो कम अज़ कम उसूली तौर पर हर मजहब तक पहुंचाया। जिया और उनके साथियों ने यह सब कुछ बदल दिया। दफ़ा 295 को 10 साल कैद के साथ मजबूत किया गया था। इजाफी जराइम मुतारफ करवाए गए। इस बार वो सब इस्लाम के लिए मखसूस थे। कुरान पाक की बेहुरमती की सज़ा उम्र कैद थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन उम्र आ मौत। 1990 में वफाकी शरी अदालत ने उम्र कैद की सज़ा के इम्कान को इस्लाम के मुनाफिक करार दिया था। इसके अलावा इसमें एक शिर्क 3 साल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत से मशरूत भी शामिल की गई थी, जिसमें सहाबा किराम की तौहीन को जुर्म करार दिया गया था। कौमी असेंबली ने हाल ही में इसमें 10 साल की तौसी की तजवीज़ पेश की थी, और 2 दीगर जराइम इतनी ही शिद्दत के थे जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए तैयार किए गए थे कि अहमदी शहरी मुसलमान के तौर पर जाहिर नहीं कर सकेंगे, अपने अकीदे के वर्जन को फरोग नहीं दे सकेंगे, मुसलमानों के मजहबी जज्बात को किसी भी तरह से मजरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में इन दफात की आईनी हैसियत की तौसीक की, ज्यादातर इस दलील पर कि चूंकि इस्लाम और उसके नाम मुसलमानों की दानिशवराना मलकियत है, लिहाजा किसी अहमदी की तरफ से इसका अवामी मुजाहिरा कम्युनिटी के लिए जुर्म का बाइस बन सकता है, अमन अम्मा का मसला पैदा कर सकता है, और इसलिए माकूल हद तक इसमें कमी लाई जा सकती है। चुनांचे पाकिस्तान उन मुट्ठी भर ममालिक में शामिल हो गया जहां तौहीन मजहब के कवानीन दुनिया के सख्त तरीन और सबसे ज्यादा इम्तियाजी हैं। अगर उसका मकसद तौहीन रसालत करने वालों को रोकना था तो इसने इसके बरक्स काम किया है। खासतौर पर गुज़िश्ता दहाई में यह मसला जहन को बेहिस करने वाले तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ताहम सारा इल्जाम जिया पर डालना कदरे मुज़हका खेज है। किसी न किसी शक्ल में इस्लामाइजेशन एक मजहबी तौर पर महदूद आइन का मंतिकी अंजाम है जो इस्लाम के अहकाम के इतलाक का मुतालबा करता है। मजीद बरा 30 साल गुजर चुके हैं और अब तक इन कवानीन ने एक वाज़ेह जमहूरी नौयत हासिल कर ली है। फर्ज करें कि उनका पहले से कोई वजूद नहीं था। दर हकीकत उनकी हिमायत इस कदर पुख्ता है कि एक बड़ी आबादी उन्हें अछूत समझती है और उनकी इस्लाह के मुतालबे को हकीकत पसंदी से जोड़ती है। एक ऐसे दौर में जब साइबर स्पेस में इंतहाई तेज रफ्तारी से मालूमात को क्रॉस पोलिनाइज किया जा रहा है,
ये रवैया तबाही की पेशगोई करता है। कानून साज असेंबलियों के जरिए बनाए जाने वाले कवानीन इंसानी पैदावार हैं और उनकी निगरानी की जानी चाहिए, उनके असरात का मुताला किया जाना चाहिए, उनकी मुसलसल मुनासबत की जांच पड़ताल की जानी चाहिए और कभी भी पैदा होने की ज़रूरत है तब्दील हज़फ किया जाना चाहिए, ख़ास तौर पर जब उनकी बरकरारी अवामी मफाद के लिए नुकसानदेह साबित होती है। इसके बरक्स तजवीज़ करना अपने आप को जमूद पर मजबूर करना है और पोलराइजेशन और बुनियाद परस्ती इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हम अपने ज़मीर की बेतरतीबी की वजह से मज़ीद इस खाई में डूबने का ख़तरा मोल ले रहे हैं। मज़मून निगार बैरिस्टर हैं। अखज़ शुदा बतारीख़ 29 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.